Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited, IFFCO, has launched Dharmarit, a natural botanical seaweed extract, at the Mega Cooperative and Farmers Conference held in Bengaluru. The product, enriched with amino acids and alginic acids, aims to promote sustainable, technology-driven, and farmer-friendly agriculture while improving soil health and crop productivity. The conference was held at GKVK, Bengaluru, and witnessed the participation of nearly 2,000 farmers and cooperative members from across Karnataka. The event was also live telecast across all districts of the state, ensuring wider reach to the farming community. Addressing the gathering, IFFCO Chairman Shri Dilip Sanghani highlighted the vital role of cooperatives in India's agricultural growth and emphasized the need for continuous farmer-centric innovation. IFFCO Managing Director Shri K. J. Patel said that Dharmarit reflects IFFCO's commitment to combining scientific innovation with natural bio-based solutions. He added that integrating botanical inputs like Dharmarit with nano-fertilizers can help farmers achieve better yields with optimized costs. The launch marks another step by IFFCO towards building a sustainable and resilient agricultural ecosystem. ಇದರ ಮಹತ್ವದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸಂಕ್ಷೇಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆ ಆಗಲಿ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿರಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಲ್ಯಾಬ್ ಏನಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅದು ಮಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಇಫ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಫ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರ 3 ದಶಕಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಕೃಷಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ कर्नाटक में आज बेंगलुरु के पास जो किसान सम्मेलन हुआ, किसानों की रुचि अति आधुनिक संसाधनों के साथ अपनी ज़मीन जो है वो यथावत स्थिति में फलद्रुप कैसे रह पाए, इनके बारे की जो चिंता है वो चिंता को दूर करने के लिए इफको हमेशा कटिबद्ध है. नए नए संशोधन करके किसानों के हित में, राष्ट्र के हित में इफको काम जो कर रहा है, यहाँ की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सरकार का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टर, एग्रीकल्चर कुलपति जिस तरह से सहयोग दे रहा है, मैं इफको और किसान बंधुओं की ओर से उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ. प्रधानमंत्री ने जो चिंता की थी और किसानों को अपील की थी, किसान बंधुओं आप यूरिया कम थोड़ा उपयोग करके अपनी ज़मीन को बचाओ, अपना वायु प्रदूषण न हो इनकी चिंता करो. और इस शब्दों के साथ इफको ने नया संशोधन किया, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, अब धारा अमृत, वो सब अपनी ज़मीन को नुकसान न करे और उत्पादन ज़्यादा दे, किसानों की समृद्धि सलामती रखे. इस दिशा में इफको काम कर रहा है, नया संशोधन भी कर रहा है. मुझे विश्वास है अगले दिनों में इफको के माध्यम से देश की ज़मीन सुरक्षित रहे, किसानों की आय सुरक्षित समृद्धि के साथ सलामत रहे. इसी दिशा में इफको सातत्यपूर्वक सतत काम करता रहेगा. और आज कर्नाटक किसानों ने जिस तरह से सहयोग दिया है, जो उत्साह बढ़ाया है, वो हमारा उत्साह और ताकत से किसानों के हित में इफको काम करता रहेगा.